हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन बेसिक्स टू एडवांस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के बारे में। सीरीज की पिछली वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में, वेयर वी विल स्टडी अबाउट ऑल द डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। सो विदाउट डिलेइंग फर्दर, लेट अस स्ट्रेट जंप इनटू इट। So guys, let us firstly understand कि what is a data type. So data type को हम लोग एक क्लासिफिकेशन की तरह कंसीडर कर सकते हैं which tells us about the type of value जो उसके वेरिएबल में स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी वेरिएबल में 10 स्टोर किया है, so it will tell us that it is of integer data type. एंड अगर मैंने हाई पाइथन स्टोर किया है, सो इट विल टेल अस दैट इट इज ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड 10.5 इज अ फ्लोट डेटा टाइप। पाइथन में वी हैव अ बिल्ट इन फंक्शन कॉल्ड टाइप फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम लोग वेरिएबल की डेटा टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन। सो इसमें सबसे पहली डेटा टाइप है नंबर्स, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होती हैं, और नंबर्स आगे फर्दर डिवाइडेड है इनटू इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड फ्लोट्स में। इसमें इंटीजर की बात करें तो इंटीजर कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर विच कैन बी ऑफ एनी रेंज। पाइथन में लेंथ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड इज फ्लोट, विच इज फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, फॉर एग्जांपल 1.9, 2.9, 3.9 और 3.90565, ये अप टू 15 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेट होता है। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स नंबर विच कंटेन्स वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, जहां पर x एंड y रिप्रेजेंट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया a, जिसमें मैंने वैल्यू 10 को स्टोर किया है, एंड इन b मैंने स्टोर किया है हाई पाइथन, एंड इन c मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू ले ली है 8.9। सो लेट अस सी द टाइप ऑफ a by using type keyword. Similarly, let us copy this and let us do it for the B and C as well. So let me run it, and यहाँ पर you can see that A is of integer type, B is of string type and C is of floating type. सेकेंड इज सीक्वेंस डेटा टाइप, जो फर्दर डिवाइडेड है स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल में। जिसमें से स्ट्रिंग्स की बात करें तो इट इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो कि रिप्रेजेंट होते हैं इनसाइड अ कोटेशन। नाउ वी कैन राइट स्ट्रिंग इनसाइड अ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। स्ट्रिंग्स में हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड कॉन्कैटिनेशन। नाउ व्हाट दोज आर, इनके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। सो लेट अस सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। स्ट्रिंग के बारे में मैंने जस्ट अभी मेंशन किया दैट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो कि कोड्स के अंदर इनिशियलाइज होती है। सो लेट अस सी हाउ इट इज डिक्लेयर्ड। सो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है a, एंड इसमें मैं एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूं, माय नेम इज अक्षय, एंड लेट अस प्रिंट इट, एंड इट सेज माय नेम इज अक्षय। सो दिस इज हाउ अ स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड। सो लेट अस टेक वन मोर वेरिएबल जिसमें मैं एक और स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूं, एंड दिस टाइम आई एम यूजिंग डबल कोट्स। आप लोग चाहें तो सिंगल या ट्रिपल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। So here I will store, I am a data scientist. Now let us print this as well. And here you can see my name is Akshay and I am a data scientist. Now बात कर लेते हैं few of the operations की जो स्ट्रिंग पर परफॉर्म किए जा सकते हैं, एंड उसमें सबसे पहले बात करेंगे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की। Now what those are, let us study them in depth. So मैंने यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स लिए हैं, which is I am Akshay and I am a data scientist. एंड गाइस, यहाँ पर हर स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर का एक यूनिक इंडेक्स नंबर भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग फर्स्ट स्ट्रिंग की बात करें विच इज आई एम अक्षय, तो यहाँ पर आई विल बी इंडेक्स 0, दिस स्पेस विल बी इंडेक्स 1, ए विल बी इंडेक्स 2, एम विल बी 3, अगेन स्पेस विल बी 4, ए विल बी 5, के 6, एस 7, एच 8, ए 9 एंड वाई 10। सिमिलरली हम लोग सेकंड स्ट्रिंग दैट इज आई एम अ डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आई विल बी इंडेक्स 0, स्पेस विल बी 1, ए विल बी 2, M3 space 4, then A will be 5 space 6, D7 and so on. हम लोग चाहें तो इन कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं with the help of their index number. So let us see it with the help of an example. Print third character of A string. And as told, I is 0, space 1, A2 and M3. So output M होना चाहिए, and let us run it. And it gives M. So this is what indexing is. Now let us talk about slicing. As suggested by the name, slicing से हम लोग string को छोटे parts में divide कर सकते हैं या फिर उसे slice कर सकते हैं by using slice operator. So let us see it with the help of an example.
So let us slice string A from index 0 to index 3 and let me run it, and it returns IA. Let us see it with the help of one more example. Slice A from 0 up to last. Let me run it, and it gives the whole string. यहाँ पर हमेशा याद रखना that this first value is the starting point and the second value is the ending point of a string. So let us take one more example. Print A. Let the starting point be index 0. Let the ending point be index 9. And this time मैं इनके बीच में separation भी create करना चाहता हूँ. And let us separate them with 2. And let me run it. So here you can see that मैंने इसको 0 से 9 तक slice किया था with the separation of 2. I was 0 जो print हो गया है, then this space was index 1 जो neglect हुआ है, then this A was index 2 जो print हुआ है, M was index 3 जो neglect हुआ है, space was index 4 वो print हुआ है, A index 5 neglect हुआ है, K index 6 जो print हुआ है, S index 7 neglect हुआ है, H index 8 जो print हुआ है, and that's it. So after indexing and slicing, let us talk about string concatenation. So string concatenation का मतलब है to add two or more strings. And we can do this by using plus operator. Let us see it with the help of an example. So मैं यहाँ पर string A and string B को concatenate कर रहा हूँ. So it should return I am Akshay, I am a data scientist. Let me run it. And here is the output. So this is how you can concatenate two or more strings. Now let us see how to repeat strings. And repetition के लिए हम लोग multiply operator का use करते हैं. So let us multiply A by 5. और इसने I am Akshay को 5 बार return कर दिया है. So these were few of the operations of strings. बाकी operations के बारे में हम लोग बात करेंगे in data structures. So let us go back and let us talk about lists. So here is list. Guys, list के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में भी बात करी थी, जहां पर मैंने आपको बताया था that list is written within a square bracket and इसके हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट आउट किया जाता है. Like string, यहाँ पर भी हम लोग slice operator, concatenation operator and repetition operator का यूज कर सकते हैं. So let us see it with the help of an example. So let us initialize a list L जिसमें मैं 4 वैल्यूज को स्टोर कर रहा हूँ, where first one is integer 1, second is a string, third is also a string, and fourth is an integer. So this is how a string is declared. Now let us print it. And here is the output of the list. And as told guys कि string की तरह यहाँ पर भी indexing and slicing का concept होता है. So this first element will be index 0, this second element will be index 1, third element will be index 2, fourth element will be index 3 and so on. So let us print this list from index 1 to 3, or we can say हम लोग list को slice कर रहे हैं. So it gives 1 in Python. So 1 was the starting point and 3 was the ending point, hence it gives index 1 and index 2. Let us see one more example. Let us slice it from index 0 to 2. So इसे return करना चाहिए 1 and high. Let us see what it returns. And it gives 1 and high. Let us see it with the help of one more example. Let us print list from index 1 to last. And it gives high Python 2. Guys, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप लोग एंडिंग पॉइंट डिक्लेयर नहीं करोगे तो इट मींस कि सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे. एंड बिकॉज हाई वाज इंडेक्स 1, सो इसने हाई से लेकर सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया. एंड दिस इज हाउ इट रिटर्न्स हाई पाइथन 2. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ concatenation. So let me concatenate string L with string L. And it gives 1 high Python 2, 1 high Python 2. Now let us see the example of repetition. So let me repeat this list 3 times. And it gives 1 high Python 2, 1 high Python 2 and 1 high Python 2. So these were few of the basic operations of list. There are many others इनके बारे में हम लोग data structures में बात करेंगे.
As of now, just remember कि list को कैसे declare किया जाता है, and at the same time, remember these basic operations of list. Now let us talk about tuples. Tuples are like list guys, जहाँ पर भी हम लोग different primitive data structures को store कर सकते हैं. Tuples को parentheses के अंदर declare किया जाता है, and each value is separated by a comma. A tuple is also a read-only data structure, that is हम लोग declaration के बाद tuple को modify नहीं कर सकते हैं. So let us see it with the help of an example. So let us initialize a tuple named tup, जहाँ पर मैंने first element hi, second element python, and third element integer 2 store किया है. So let us print it. And this is the value of this tuple. Now guys, tuple maybe we can use the concept of indexing and slicing. So let us see it with the help of an example. Print tup from index 1 to last. Print tup to print tup plus tup. Print tup into 3. So let me run this, and it gives hi python 2, which is the tuple itself. Second is tuple ranging from 1 to last, so it gives python and 2. Third is tuple index 2, so it gives 2. Fourth is tuple plus tuple, that is concatenation, so it gives hi python 2, hi python 2. And fifth is tuple into 3, that is repetition, so it gives hi python 2, hi python 2, and hi python 2. Guys, tuples में I use the word primitive data structure, so you might be wondering कि primitive data structures क्या होता है. Actually, there are two types of data structures, which is primitive and non-primitive. So primitive data structures 4 data structures होते हैं जो single type of value को store करते हैं, and non-primitive data structures 4 data structures होते हैं जो multiple type of values को store कर सकते हैं. Data types like int, float, string, and boolean are the example of primitive data type, while data types like list, tuple, dictionary, and set are the examples of non-primitive data types. Now let us head forward towards dictionary. So guys, dictionary is a data type जहाँ पर data key value pair में store होता है, where key can hold any primitive data type. Dictionary को curly braces के अंदर declare किया जाता है, and each element of a dictionary is separated by a comma. So let us see it with the help of an example. So let us take a dictionary D. जिसमें let 1 be the first key and Akshay be the first element, 2 be the second key and Arvind be second element, 3 be third key and Satyam be third element, 4 be the fourth key and Aditi be fourth element. So let us print it. And these are the elements of dictionary. Dictionaries में instead of index हम लोग key से data को access कर सकते हैं. So let us try it. Print D and data of key 1. Let me run it, and it gives Akshay. Similarly, let us fetch the data of key 4, and it will give Aditi. हम लोग चाहें तो सारी keys को भी print कर सकते हैं using keys function. So let us write print d dot keys. So let us run it, and इसने सारी keys को return कर दिया है. Similarly, हम लोग चाहें तो सारी values को भी access कर सकते हैं using values function. So let us write print d dot values. And here it gives Akshay, Arvind, Satyam, and Aditi. So that is about dictionaries. Now let us go towards Boolean. So here is Boolean, and guys, Boolean just दो values provide करवाता है, which is true and false. And in values का हम लोग use कर सकते हैं to identify if a given statement is true or false. True को हम लोग किसी भी non-zero value या फिर character t से assign कर सकते हैं, and false को 0 या फिर f से assign कर सकते हैं. So let us see it with the help of an example. So let us write print 6 modulus 2 equals to 0, and print Akshay equals to Akshay.
Now guys, it will return true and false, and that is because 6 modulus 2 equals to 0, which is absolutely true, hence it will return true. And here this string Akshay and this string Akshay are not equal. And here comes the concept of case sensitivity. So what is case sensitivity? So it defines whether the uppercase or lowercase elements are treated as distinct or equivalent. So अगर lowercase and uppercase distinct है, तो we call it case sensitive. While अगर lowercase and uppercase equivalent है, so we call it case insensitive. So let us run it, and it gives true and false. Now let's head forward towards set. So guys, Python set एक unordered data type है, that is हमने elements को जिस order में store किया है, returning element उससे different sequence या order में हो सकते हैं. We can declare a set by using set function or by declaring it inside curly braces जहाँ पर each element is separated by a comma. So let us see it with the help of an example. So let us initialize set to 1 by using set function, and let us declare one more set जिसमें first element is Akshay, second element is 1, third element is 2, and fourth element is Aditi. Now let us print this set 2. And here it is. So let us do slight more changes. Let me add something to set 1 by using add function. Let me add 10 and let me print it. So this is set 2 and this is set 1. Now let us remove any element from set 2 by using remove function. So let me write set2.remove and let us remove 2. And let me print updated set 2. So here is the new set 2. And with that, we have completed this topic of Python data types. So that's it from this video, guys. I hope you like this one, and if you do, kindly give it a thumbs up, share it with your friends, and forget not to subscribe to our channel. If you have any doubt related to any of the topic, you can contact me on my Facebook and Instagram handles. Link in the description box. Also check description box for the notes of this video and link to our other YouTube videos as well. This is Akshay signing off.